Liverpool suffered their first loss of the Champions League campaign, and now it makes it two losses in two games. I mean, is our luck running out, or like are the results now catching up with the performances? We are going to touch every element of this conversation right here. So welcome back to my channel, The Marching Reds. मैं हूं अमन चीमा. इस वीडियो में आई एम गोइंग टू रिव्यू द गेम बिटवीन लिवरपूल एंड गैलाटासराय, जिसमें वी सॉ Galatasaray beat Liverpool by 1-0 scoreline, and I'll stick my neck out and say that that wasn't a penalty. So let's start right away. First of all, a massive shout out to the Galatasaray fans. I mean, the way they honored Diogo Jota when his name came up and when his photo came up on their screen, I can only say thank you because that was a class act. So may his soul rest in peace. And yeah, that was a really nice gesture by those fans. गेम की मैं बात करूँ, प्लेइंग 11 की शुरुआत करते हैं विद गोलकीपर. आई मीन एलिसन इन गोल, देयर वाज नो ब्रेनर. डिफेंस में it was Kirkes at left back, Konate and Van Dijk as a centre back pairing, and Frimpong started, but Frimpong wasn't at the right back position. It was actually Dominic Soboslai, and midfield में it was Gravenberch, expected. McAllister sat out on the bench. He started on the bench. We saw Curtis Jones get a start, and with him it was Florian Wirtz. Frontline mate was Gakpo, Ekitike, who came from a suspension, and Frimpong, who wasn't at the right back, but actually at the right winger position. That meant that McAllister started on bench, Alexander Isak started on bench, and one name was also on the bench, which we as Liverpool fans were not familiar with, of him starting on the bench, was the Egyptian king Mo Salah. I mean, my thoughts are really straightforward in this situation, which is that he's getting older day by day and we have to manage his minutes. Having said that, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई साला को ड्रॉप किया गया था based on his form and like he's not getting so involved in the game. But जहां तक मैं देख रहा हूँ, Arne Slot is not an emotional manager. Like the fact that he has that bravery and he has that courage in him to take these difficult calls, especially coming after a loss against Crystal Palace, and आप अपने highest गोल स्कोरर को ही बेंच पे स्टार्ट कर रहे हो अगेंस्ट द टीम लाइक गैलाटासराय एंड इन अ कॉम्पिटिशन लाइक चैंपियंस लीग, जहां पे आपका अभी अगले स्टेज पे जाना गारंटीड नहीं है. जस्ट शोज कि ही इज नॉट अफ्रेड. ही will do the right thing for Liverpool. He will give himself and his team the best chance to win a game. And मोहम्मद साला का बेंच पे शुरुआत करना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो था एज अ फैन टू डाइजेस्ट, बट इट शुड बी समथिंग दैट वी वुड बी गेटिंग यूज टू इट बिकॉज देयर विल बी प्लेयर्स लाइक हिम, लाइक वैन डाइक भी उस केस में आता है, रॉबर्टसन भी उस केस में आता है. चलो रॉबर्टसन के साथ तो वी हैव नाउ यूज्ड टू हिम, लाइक स्टार्टिंग ऑन द बेंच एंड कर्क इज टेकिंग हिज पोजीशन. बट ऐसे सीनियर प्लेयर्स ना, दे विल नॉट बी स्टार्टिंग एवरी गेम, दे विल नॉट बी एंडिंग एवरी गेम. सो yeah, I mean, it was something different for sure, but something that we need adjusting to as fans. तो quite interesting lineup थी by Arne Slot. एंड जहां तक ब्रेवरी की बात है, करेज की बात है, उसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है. काफी लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे कि भाई लाइक हाउ कैन यू लेट साला, इजैक एंड मैकअलिस्टर स्टार्ट ऑन द बेंच. लाइक ठीक है, अगर रिजल्ट हमारे फेवर में होता तो आप ही लोग बोल रहे होते कि वाओ व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक बाय स्लॉट, लाइक ही जस्ट लुक्स एट द ऑपोजिशन एंड गोज राइट एट देम, एंड लाइक वो सारी बातें आती. बट जस्ट बिकॉज रिजल्ट हमारे खिलाफ गया है, of course, that is the perfect breeding ground for all the questions to be asked, for all the opposition fans to rile up any Liverpool fans by saying कि भाई क्या फायदा इतना पैसे खर्चने का, या फिर like blah 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 blah. बट ठीक है, it is what it is. गेम की मैं बात करूं, पहले ही मिनट में गैलाटासराय को वन ऑन वन सिचुएशन मिल जाती है अगेंस्ट एलिसन. एंड again, if it's one on one against Allison, there is only one winner, and he made sure that he shut the door on any early goal by Galatasaray. अगले ही मिनट में we sort of built up an attack, and then it was nice to see those glimpses of like Frimpong running down the wing. And I mean, it was funny because usually Salah runs down the wing, given that his song also says that. But Frimpong was sort of making sure that we stretched that Galatasaray defense, and then he was trying to cross the ball, could not do it in the first play, but you could already see that little excitement in play. And as a viewer, I was like, "Look, this might be something interesting because we are not used to this, but we should be क्या कहते हैं, getting familiarized with this thing also, because जैसे ही AFCON के लिए साला जाएगा, I would be expecting Frimpong to start more games
इन दैट राइट विंग पोजीशन। तो ठीक है, एकेटिके के पास भी चांस आया, फ्लोरिन वर्ड्स के पास भी चांस आया, कोनाटे also had a really close header missed, and उसी के साथ साथ 15-16 मिनट पे गैलाटासराय को पेनल्टी मिलती है, एंड आई एम स्टिल बैफल्ड बाय द रेफरीज डिसीजन ऑफ गिविंग दैट अ पेनल्टी। आई मीन कोई फुट कांटेक्ट नहीं था, कोई बॉडी कांटेक्ट नहीं था, डोमिनिक सोबोसलाई की ट्रेलिंग आर्म उसके चेहरे पे जाके लगती है, एंड फुल मार्क्स टू दैट प्लेयर, लाइक जो गैलाटासराय का था, द वे ही एक्टेड एज इफ लाइक पता नहीं क्या ही हो गया उसके चेहरे पे, द वे ही फेल टू द ग्राउंड। ऐसा लग रहा था कि भाई एक पता नहीं डिजास्टर्स टैकल किया सोबोसलाई ने, and the referee भी, I mean, I don't know how, why, like what did he see in that act that he bought it and pointed to the penalty spot. VAR भी वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता था because of course contact was there, but for me it was never, I mean, never a penalty. Osimhen comes up, scores the goal. Alisson also tried to like sort of, I mean, he dived to his right, but then जैसे उसको पता लगा बॉल सीधा आ रही है, he sort of with his trailing leg and arm sort of tried to catch the ball, or like उसको ये था कि भी अगर टच टच लग जाए क्या पता डिफ्लेक्ट हो जाए, but unfortunately he could not save the ball from going into the net. Galatasaray 1, Liverpool 0, and उसके बाद भी काफी ओपन गेम थी, लाइक both the teams were sort of losing balls, both the teams were sort of giving it away, both the teams were creating chances also, और हाफ टाइम पे इट वाज 1-0। ठीक है, नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, परफॉर्मेंसेस मेरे हिसाब से काफी अच्छी थी इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई सॉ अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, एंड हैविंग सेड दैट इसका मतलब ये नहीं गलतियां नहीं हो रही थी, लाइक कोनाटे वाज गिविंग द बॉल हियर और देयर, लाइक ग्रावेनबर्ग आल्सो मेड अ सिली मिस्टेक, एंड Curtis Jones be like second half में ज़्यादा he was trying to hold on to that ball a little longer than what I was comfortable with, and then ठीक है उसने एक बार तो रिकवरी अच्छी करी in the second half, but I was like कि भाई तू कर क्यों नहीं रहा है पास। So yeah, second half शुरू होता है, in the first 10-15 minutes or so we looked in the ascendancy, we tried to score a goal, नहीं हो पाया, वहीं पे जाके again we lose the ball. Allison has to sprint back to his starting position as the goalkeeper, like वो थोड़ा आगे आ गया था तब तक because we had the ball, but we lose the ball, he tracks back, sprints back, saves the shot and gets up injured. So I mean, या लाइक ठीक है, एक होती है परफॉर्मेंस की बात, एक होती है रिजल्ट की बात, बट एक चीज जो हर एक मैनेजर चाहता है कि अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, एटलीस्ट वो सारे प्लेयर्स फिट वापस जाएं जो कि आप लेकर आए थे, एंड इस केस में एलिसन गॉट इंजर्ड, आई थिंक इज आउट फॉर द चेल्सी गेम आल्सो, like as per the reports he might be back after the international break, and just because one injury wasn't enough, Hugo Ekitike also got injured. He was trying to control a ball played by Szoboszlai जो कि थोड़ी उसकी रीच के बाहर थी, he tried to control by stretching his leg, couldn't control his leg, got a I think a hamstring में कुछ है, I think he felt something, and even he had to be taken off. Then we bring on Isaac, we bring on Mohamed Salah, of course, we bring on Bradley, we bring on McAllister, because ये चार होने के बाद मोहम्मद आर्शफली को उसी टाइम रिप्लेस कर गया था when Alisson को हो गया था कि भाई he cannot continue. So yeah, I mean second half maybe it was more of like Liverpool trying to create something, still trying to create something but could not do it. Last moment पे like 85th मिनट के आसपास हमें पेनल्टी भी मिली, एंड एक बार रिप्ले देखने में ही इट वाज प्रीटी ऑब्वियस कि पेनल्टी तो नहीं थी, एंड थैंकफुली डिसीजन वहाँ पे सही हुआ। आई नो इट वाज अगेंस्ट आवर टीम, बट लाइक टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, सो ठीक है, आई विल नॉट हार्प अबाउट इट बिकॉज इट वाज एक्चुअली में नथिंग। बट एक चीज जो मेरे को बोलनी पड़ेगी रिगार्डिंग गैलाटासराय इज द फैक्ट दैट यार जैसे सेकंड हाफ बढ़ी जा रहा था ना, उनके प्लेयर्स गिरी जा रहे थे। आई मीन इतनी बार ऐसा हुआ जब लाइक हम लोग, हमें थ्रो इन मिल रही है, हमें कॉर्नर मिल रहा है, हमें कोई फ्री किक मिल रही है, इट वाज नॉट पॉसिबल कि वो विद इन 10-15 सेकंड्स लिया जाए। व्हाई? बिकॉज कोई उनका प्लेयर हमारे बॉक्स में गिरा हुआ है, कोई उनका प्लेयर हाफ लाइन पे गिरा हुआ है, कोई उनका प्लेयर अपने बॉक्स में गिरा हुआ है। उनका प्लान यही था कि भाई उनको कभी भी ना रिदम में सेटल नहीं होने देना। आई मीन ठीक है, इट वर्कड फॉर देम वंडरफुल, दे गॉट द 3 पॉइंट्स, आई मीन वी वर द लूजर्स इवेंचुअली, बट हंसी आ रही थी मेरे को आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ओनली, एंड सो वाज आर्ने स्लॉट रिएक्टिंग द सेम वे, जहाँ पे वो स्टेडियम में कर रहा था, मैं अपने घर पे कर रहा था, एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज हैपनिंग, बिकॉज इट वाज एक्चुअली लुकिंग लाइक एज इफ लाइक ये जिसको नहीं कहते कि टैग करके गेम खेल रहे हैं कि भाई अगली बार जब बॉल जाएगी तो मैं गिरूंगा,
फिर अगली बार जब फ्री किक होगी तब तू गिरी हो, लाइक ऐसे करो ऐसे करो, एंड आई एम लाइक भाई व्हाट इज रॉन्ग विद देम, इट इज लुकिंग सो फनी। लाइक ठीक है, crowd played a part, they made sure they got over the line, but yeah, I mean, I would rather expect 90 minutes of football rather than 80 70 minutes of football and like 15 20 minutes of doing all this stuff. So ठीक है, we end up losing, and या इट इज व्हाट इट इज। आई मीन एक मेरे को इंस्टेंस जो अभी एकदम से याद आया was कि भाई एक बार जब फ्लोरिन वर्स के खिलाफ फाउल हुआ था, उसने तो कुछ किया भी नहीं था, he controlled the ball, he got it past the Galatasaray player who was coming on to him, and Galatasaray का जो वो प्लेयर था, आई डोंट नो एग्जैक्टली रिमेंबर कौन था, लमीना था या फिर पता नहीं कोई और था, लाइक वो अपने पैर से ही पैर अड़ा के गिर जाता है, एंड देन रेफरी को लगता है कि भाई उसने फाउल किया है, एंड ऑफ कोर्स फ्लोरिन वर्स seemed frustrated and so was I, and of course hands were up in the air by me, by Florin Wirtz, by Slot, and मतलब काफी frustrating game थी for a Liverpool fan, and having said that, अब मेरे को थोड़ा सा ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू पे ये बात एड्रेस करनी है। गाइस आई नो बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, पूछने बनते भी हैं। क्या प्लेइंग 11 सही थी? क्या हम लोग ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश तो नहीं कर रहे? क्या हम लोग ज्यादा ही फॉर्मेशन चेंज करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? मेरा सिंपल जवाब ये रहेगा कि गाइज अगर आप एक सेकंड पीछे लेके जरा सोचो कि क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ 90th 95th मिनट तक भी, 97th मिनट तक भी हम लोग 1-1 थे। परफॉर्मेंस आप क्वेश्चन करो, बिंदास क्वेश्चन करो, बट हम लोग 1-1 थे। लास्ट मिनट पे जाके हम लोगों ने कंसीड किया। इस गेम में भी अगेंस्ट गैलाटासराय अगर वो पेनल्टी ना अवॉर्ड की जाती, जो कि मेरे हिसाब से अभी भी पेनल्टी नहीं है, अगर आपने वो पेनल्टी देखी है, लाइक नॉट द वे ही स्कोर्ड, द वे लिवरपूल कंसीडर्ड इट, प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना कि डू यू रियली थिंक इट्स अ पेनल्टी और नॉट। लाइक ठीक है, आप अपना थोड़ा सा लिवरपूल का बायस अनबायस सेपरेट रख के ऑनेस्टली बताना कि वेदर दैट वाज अ पेनल्टी और नो। ठीक है, तो इफ यू वुड हैव गिवन अ ड्रॉ टू मी अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस अवे, अगेंस्ट गैलाटासराय अवे, मेकिंग श्योर दैट वी स्टे अनबीटन, I would have taken it in a second, in a heartbeat, कि भाई ठीक है, these are the two tough away fixtures for us, point ले लो, we'll be sitting right at the top of the Premier League, we'll be sitting in a comfortable position in the Champions League, सब बढ़िया चलेगा। But just because we've lost, everybody is sort of complaining, blaming, and to certain people in the team they're abusing also, and I'm like भाई what the hell is happening? Like ये अपनी टीम है, like don't get me wrong, even I am disappointed, even I am frustrated, but यहीं पे तो एक फैन का काम होगा जहाँ पे you have to back your club, like you have to back the manager who won the Premier League last season in his very first season after being told कि भाई ये पता नहीं क्या पता पहले सीजन में सैक हो जाए। like ऐसे मोमेंट्स पे ना you have to be trusting the people who are at the helm, because out of the blue, अच्छा एक हफ्ते पहले तक वो भी the perfect team, कुछ लोग बोलेंगे हाँ, like they are grinding out results, they are doing everything, and within a span of like what 4 days or so, now we've become the worst team, like ऐसे नहीं होता है, like you have to support your team when it counts, जब मैचेस जीत रहे हैं then of course आप देखोगे जाके like इसके रिएक्शंस उसके रिएक्शंस, वो क्या बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, बट ऐसे मोमेंट पे it's their time to laugh, but it's your time to obviously not at least overreact. React, but not overreact. So I am backing this team to the hilt. And जैसे guys ये time निकल रहा है ना, like the more time that we are letting them be with themselves, they are going to get much stronger. They are going to get much more adaptable. They are going to get much more flexible. Chemistry और बनेगी और वो on the pitch भी दिखेगी। तो if you're a Liverpool fan, let me know how you're feeling. 2 losses back to back. Are you feeling jittery? Are you feeling nervous? Are you feeling still confident? Let me know in the comment section. And if you're a neutral fan, let me know that if you actually watched the game or if you just watched the scoreline or the highlights and how you felt about the game. Because मैंने तो आपको अपने thoughts बता दिए. I am really looking forward to know your opinion on this game and the situation of Liverpool overall. So if you've liked this video, let me know by liking this video. Again, chiming in with your comments because that is where we can discuss different footballing perspectives. And also let me know by subscribing to my channel. And yeah, it's Chelsea up next, and I will see you at the preview. So till that time, take care.